Is my screen visible, guys? Yes. Developer console is visible to all of you, hopefully. Should be fine. Right. So before I begin today, पिछले दिन के जो assignment मैंने दिया था, कल आप लोगों को assignment दिया था, did all of you get a chance to go through the assignment? Anyone has any queries, any doubts regarding what is happening there, any issues? Yes, sir, I've completed it, but I would say okay, let's do it at the end of the class, I guess. No, no. Do you have any doubts or issues? Yes, sir. Few things are there, sir. Okay, then ask. Sir, shall I ask at the end of the class? Because it might take some No, time, no, sir. no, it's fine. Completing that is because now we are planning to start triggers. Before that, if you guys are not familiar with the operations, then that is an issue. Sir, shall I share the screen? Yes. Let, hold on. I think I'm sharing. Here, is it visible? Yes. Sir, firstly, I had a lot of doubt about this. Few things were there that we have not completed so far as for example, dynamic query, how to run a dynamic query. There's a different syntax. That is one. Yes. Uh, but if you remember, in the last class, we were having a conversation about recording. There was a function which was returning something and it was stored into a result set, something array of result type something. Database.save result. Yes. Into that, sir, I tried to do some digging. So what is there in that is it returns, sir, three types. There is a certain sort of exercise also that you have given. Let me. सर मतलब मेरे को आई एम नॉट श्योर कि वो कौन सा एक्सरसाइज पॉइंट था जो आपने दिए थे 6 7 ऐसे टोटल करके बट उसमें सर वो उसमें आ रहा था कि जैसे मैंने उसको नॉर्मली ना सिस्टम डॉट डीबग करके आउट करा लिया था जैसे इनटू दिस No, which one you are mentioning? Can you mention the method? If it was like सर दिस this वन way, हेयर वी वर डूइंग ना वी वर रिकॉर्डिंग दिस वन यू वर सेइंग इंडेक्सिंग यस Right. Yes. so into this sir it returns what I did was I fetch the output into that result type and I made it a Right. list type. You had done it using it like an array. Yes. In that it returns sir three types. It was returning three types. One was is success, true or false, boolean type. It was also returning the ID of the record that we were doing. Right. So on that I wanted to have a discussion. Like last time you were telling it was trying to it helps us to bridge that index number so that we can get to know which record is giving success or giving false or not Right. successful. Right. We can do that using list also and for each loop also. Okay. What happens if an insert fails? Sir, it gives a status false. Is success status is false, but which record is false? Uh, mm, Sure, I will find where that case is.
shall I discuss at the end of the class? That's why I Do was one saying thing. it. Do one thing. Do one Yeah. thing here. Okay, hold on. Let me share my screen. My screen is visible. Yes, sir. So, right. Yes, sir. It's visible. Okay. Right. This is what it is Yes. supposed to be. Instead, what I'll do is a result. Instead of this, you just mentioned that you did as array list, right? Yeah. List of database dot save result type. Yeah. So it is the same thing. For Okay. each loop also runs on an array. That is what I told you. That array list is also called an array list. वो तो जब हमने collection पढ़ा था, then also it's the same thing. Now the thing is, okay, if I do the list, right, then this I'll do is what did I write? Is equals to okay, not insert to list. Okay. Right. Hmm. Right. Right. What happened here? What did I call here?
Not static method. सर वो सेव नहीं हुआ था वहां पे, अब हो गया। सर सेव कीजिए पीछे क्लास में, वो सेव नहीं हो रहा है, वो पुराना वाला उठा रहा है। Right. ये आया हमारे पास. या Right. This happened because I have passed all or none as false. Now, if I go to the log, if you see, as of now, my insert only failed. Okay, so I did not get any save result. Now what I'll do is, I'll make this a false. So this time it should ideally run with the status values come. Right? राइट। चला, success चला. सर तीनों चीजें दे रहा है देखो। Yeah. But did you get the ID value? तो सर दैट इज बिकॉज इट डिडंट गेट सेव, दैट्स व्हाई। That is what I have told you, right? That you can get is success. ये जो मेथड है ये array में नहीं है, ये database class का मेथड है. If you had gone through the documentation for database class, you will see all three are properties within the class, irrespective of if you use array or if you use list. The issue with trying to map with get id is it will work with update, but it won't work with insert. If this ओके was thousands of records, right? If this was thousands of record and one failed, which one failed? ओके, नाउ कंप्लीटली अंडरस्टूड व्हाई। Right? That is what I explained in detail in last class, right? That with insert, an ID is not created until it is successfully inserted. So when an insert has failed and you are trying to log an error, you know that a required field is missing, but for which record required field is missing? गॉट इट सर। Okay. राइट सर। These ones you got the ID. But if you don't even get the ID, how will you check using for each loop? How can it be done using for each loop? अंडरस्टूड सर, अब समझ में आया सर। वो पहले शायद समझ नहीं आया था कि क्यों क्या, मतलब जो बोला था वो समझ आ गया था जो आपने बोला था। मे बी मैं प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन में समझ नहीं पा रहा था कि उसका रीजन क्या है। Right. और सर एक वो नाइन्थ, आपने जो असाइनमेंट में नाइन्थ वो दे रखा है एक्सटर्नल आईडी से उसको करना है सर। अकाउंट नंबर एक्सटर्नल आईडी, वो नहीं समझ आया। वो मैंने ढूंढा भी, सर्च भी करा, बट समझ नहीं आया। External ID fields में हमने external ID पढ़ा था ना. हाँ जी। Fields में we had studied when we were working with fields. We had studied, right? What is an external ID? How to use those? Why it is नो different from a normal lookup, right? Normal ID field. No worries. ठीक है. बाकी सबका anyway I have given time till Monday, right? Let everyone practice. After that anyway I'll give a solution for this. So सर, आई it should डोंट be. थिंक वी हैव स्टडीड दैट सर। No, we had studied external IDs. मे बी आई हैव External फॉरगॉटन देन। ID, external lookup, master detail. All four we have studied. आई एम रियली नॉट श्योर सर। I'll go back in the videos if you say so, but I don't, as far as I think, I don't think we have studied. No worries. We can cover it once we cover the solution anyway. Should not be an issue. Right. Okay. Right. Anyone else? Any queries? Any doubts? Any questions?
हाँ सर, वो 11 नंबर की लाइन है ना, वो एक बार फिर से बता सकते हैं? ये कोड में। हाँ सर। Right. तो हमने जो देखा था डेटाबेस के मेथड्स थे। नॉर्मल जैसे हमारे इंसर्ट अपडेट थे, वैसे हमारे पास डेटाबेस क्लास भी आल्सो हैड द मेथड्स। राइट, वही मेथड हमने यहाँ पे यूज किया है। नाउ व्हाट वी रिमेंबर्ड, अगर हम खाली एक एट्रीब्यूट देते हैं तो डेटाबेस क्लास का एक और एट्रीब्यूट है विच इज ऑल और नन। वो अगर ट्रू होता है तो मतलब आइदर सारे रिकॉर्ड्स प्रोसेस होंगे या एक भी प्रोसेस नहीं होगा, तो उसका डिफॉल्ट वैल्यू इज ऑलवेज ट्रू। अगर आप एक्सप्लिसिटली फॉल्स पास करते हो, जब मैंने कुछ पास नहीं किया था तो डिफॉल्ट वैल्यू वाज ट्रू, इसलिए मेरा एरर मैसेज आ गया कि देखो एक रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हो पाया, इसी वजह से तीनों रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हुए। बट नाउ आई मेड इट एज फॉल्स। फॉल्स जैसे किया तो डाटाबेस विल लाइक ओके आई हैव 5 रिकॉर्ड्स, आई हैव 3 रिकॉर्ड्स, एक फेल होता है कोई बात नहीं, अगले को ट्राई करते हैं। वो फेल हो गया कोई बात नहीं, अगले को ट्राई करेंगे। अगर एक भी रिकॉर्ड सक्सेसफुल होता है तो वो उसको डेटाबेस में मॉडिफाई कर दे। सो दैट इज द ऑल और नन फ्लैग विच इज द सेकेंड एट्रीब्यूट जो मैंने बाद में डाला। नाउ नॉर्मल आप जब डीएमएल ऑपरेशन यूज कर देते हो, जैसे इंसर्ट अपडेट डीएमएल डायरेक्ट कमांड होता है, तो उसमें यू डोंट गेट अ रिजल्ट, वो अपना काम करता है, काम खत्म। दिस मेथड, द डेटाबेस क्लास मेथड्स, दे गिव यू बैक अ रिजल्ट, एंड द रिजल्ट इज व्हाट, रिजल्ट का जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए उन्होंने बना रखा है डेटाबेस क्लास के अंदर ही सेव रिजल्ट। तो व्हाई इज इट अ लिस्ट और एन एरे? इफ यू आर मॉडिफाइंग, एक एक रिकॉर्ड आप मॉडिफाई कर रहे हो तो उसका स्टेटस आएगा आपके पास। तो एक रिकॉर्ड का एक ही स्टेटस आएगा, राइट? अगर 10 रिकॉर्ड है एंड इफ इट वाज लाइक अ डीएमएल थिंग, तो 10 रिकॉर्ड का भी एक ही स्टेटस होता है, या तो 10 के 10 सक्सेस होंगे या 10 के 10 फेल होंगे। बट बिकॉज यहाँ पे आपको पार्शियल करने का ऑप्शन देता है, तो दैट इज वाई इट हैज टू कंसिडर द सिनेरियो कि मे बी 10 में से 5 इंसर्ट होंगे, 5 इंसर्ट नहीं होंगे, राइट? मे बी 2 अपडेट होंगे, 8 अपडेट नहीं होंगे। So that is why for every record it has to maintain a separate status, right? Now in this case हम लिस्ट पे काम कर रहे हैं तो आउटपुट में भी नंबर ऑफ आइटम्स ही आएंगे which we give in list or an array, right? So वही हमने सेव किया इन द सेव रिजल्ट। अब सेव रिजल्ट की जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर भी हमारे जैसे डेटाबेस क्लास के अंदर ये मेथड्स है, राइट? इंसर्ट अपडेट डिलीट। सिमिलरली हर एक रिजल्ट के अंदर भी हमारा 3 वैल्यूज होता है। कौन कौन सा 3 वैल्यूज होता है? These are the 3 values inside. One is the actual status, right? Is it a success or is it not a success? If it is a success, then यहाँ से हम चेक कर लेंगे। If it is not a success, then also it will be not of this, मतलब this will become false, right? Second is when it is working on a record, तो obviously उसका ID होना चाहिए आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सा रिकॉर्ड का स्टेटस है। ना फॉर अपडेट डिलीट उन केसेस में क्योंकि रिकॉर्ड ऑलरेडी सिस्टम में इंसर्टेड है तो उसका डेटाबेस का ऑलरेडी आईडी, एक रिकॉर्ड आईडी बना हुआ है 18 डिजिट का। लेकिन अगर आप इंसर्ट करने जाते हो तो इंसर्ट में अगर फेल हुआ तो फिर तो रिकॉर्ड आईडी बना ही नहीं, तो इन दैट केस गेट आईडी विल कम एज नल, बट नॉर्मली दैट इज द सेकंड एट्रीब्यूट। फर्स्ट एट्रीब्यूट इज गेट एरर्स। गेट एरर्स के अंदर आपका वैल्यू तभी रहेगा जब आपका इफ सक्सेस इज फॉल्स। तो गेट एरर्स के अंदर क्या रहेगा? व्हाट इज द एरर दैट हैपेंड व्हाइल ट्राइंग टू मॉडिफाई द रिकॉर्ड। अपडेट करते वक्त कोई वैलिडेशन रूल फट गया, राइट? इंसर्ट करते वक्त कोई फील्ड रिक्वायर्ड था आपने दिया नहीं, तो वट एवर इज द एरर दैट विल कम इनसाइड द डेटाबेस डॉट एरर ऑब्जेक्ट। ओके, यस सर। फाइन, ग्रेट। एनीवन एल्स, एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज? No one? Fine. Just give me a second. I have to close it.
Sir, one more doubt I have, if I may. Right. Okay. If no one else has any questions, Sir, one then more we thing I will. wanted to ask, if I may. Right. Sir, I'm sharing the screen. सर एक क्वेश्चन था हमारे को आपने दिया था, उसमें था कि ए एक सेकंड में यहाँ पे लिखा देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन था, इट वाज दिस वन, गेट टॉप अकाउंट्स बाय अपॉर्चुनिटी रेवेन्यू। Right. तो इसमें लिमिट वाज दिस, जो हमें डायनेमिकली पास करना था, तो मैंने यहाँ पे क्वेरी लगाया है यहाँ पे, तो Hmm. जिसका मैंने लिमिट यहाँ पे दे दी, सो दैट मुझे टॉप वही वाले रिकॉर्ड्स मिले, और डिसेंडिंग से उसको सॉर्ट कर दिया कि जिसका सम अमाउंट Hmm. सबसे ज्यादा है वो टॉप पे है, देन वो डिसेंडिंग में आए। Hmm. तो लॉजिकली स्पीकिंग जब मैंने इसको इसमें एग्रीगेट रिजल्ट में स्टोर कर लिया एंड देन मैं इसको आउट करा रहा हूँ यहाँ पे फॉर Hmm. लूप ईच से, फॉर Hmm. फॉर ईच लूप से, तो टेक्निकली स्पीकिंग तो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में ही आउटपुट होना चाहिए इसका भी। Go back to the query. Query, what is the order you have descended it in? सर सम अमाउंट से मैंने डिसेंडिंग करा उसको। Okay. Do one thing. यहाँ से क्वेरी query एडिटर में हटाओ. करूँ? Yes. ओके। इसको यहाँ सर 7 दे देते हैं। सर कैन यू फाइंड आउट, आप देख सकते हैं मैंने क्या एरर करा है? Right. Now, ये जो आपने जो query run किया है, right? So in this case, what you're doing is, what is an aggregate result? Okay. Hmm. Aggregate result is basically, you can think of it like a summation of query. Okay, which means you have a criteria based on that you're trying to, group together data and then pull everything. Right. So when you are using aggregate result, so that summation has to be based on something, right? Based on some value that against something. Think of it like this way. Uh, right. ये जो तुम्हारा query है, this is running on what? This is running on what table? सर मैंने इसमें अकाउंट जिन जिन उन काउंट्स का जिनका अकाउंट आईडी और स्टेज नेम सेम है, उसका एसोसिएटेड जो अमाउंट आएगा अपॉर्चुनिटी में, उसका कराया मैंने सर। एंड आई मेड श्योर कि जीरो वाले ना आए, क्योंकि मैंने ये पहले रन करी, आई डोंट नो व्हाई इट इज गिविंग एन एरर राइट नाउ। Okay. Now remove that stage name. ग्रुप बाय में जो तुमने दो फील्ड्स ऐड किए हैं, बट सर फिर वो यहाँ से भी हटानी पड़ेगी ना? वो नहीं. First of all, after account ID, remove that group by, remove that extra comma,
And then what is having? सर वो एग्रीगेट क्वेरी में वेयर की जगह हैविंग यूज करते हैं ना. बट ग्रुप बाय के बाद आपने दो फील्ड्स डालने के बाद क्यों वो दिया है? रन दिस नाउ. वो अभी ये शायद इसलिए दे रहा है बिकॉज हम यहाँ पे स्टेज नेम से कर रहे हैं Screen फिल्टर, is लेकिन यहाँ stuck. पे नहीं लगाया. Your screen is stuck. What is happening? इट्स नॉट विजिबल. Remove. Okay, your cursor was not moving. Remove that. Hold on. Remove this whole query. Remove this whole query. Right. What is the task here? Just get top accounts by the opportunity revenue. Right. So what we need is just select account.name. Shall I write? Yes, yes, I'm telling you. Right. Select account.name. Account.name. It's a standard field. Then what we want is the sum across that account of all opportunities. So we will write sum of amount. Sum of amount. Then from which object we are querying? From opportunity. opportunity. Right. Add that. क्या क्वेरी करना है हमारा? इट्स वेरी सिंपल. हमको देने हैं अकाउंट्स बाय रेवेन्यू. सो अकाउंट और रेवेन्यू हमने ऐड किया. कहां से करना है? फ्रॉम अपॉर्चुनिटी. राइट. नाउ ग्रुप बाय. सम जो हम करेंगे, सम किन किन का करेंगे? द लॉजिक हियर इज राइट हियर. ग्रुप बाय, we will sum all those amounts for a specific account. राइट. तो मतलब 6 मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई. 3 का अकाउंट नेम इज एबीसीडी, 3 का अकाउंट नेम इज ईएफजीएच. सो देन सम विल वर्क बेस्ड ऑन व्हिच फील्ड? Account.name field. account.name. नाउ हमारे पास लॉजिक हमने बताया कि हमको मैक्सिमम से चाहिए हमको. सो देन वी हैव टू ऐड व्हाट? ऑर्डर क्लॉज. सॉर्टिंग हमको चाहिए किस फॉर्मेट में चाहिए? तो ऐड Sum ऑर्डर of बाय. amount से. Order by sum of amount. But we want highest to lowest. So we can't use the default because default is what? Ascending. So we will use descending. Right. Now run this query. Right. Now in this case, you can see the clause. कि हमारे पास there are some scenarios जहाँ पे data is missing. Right. Some will have account name missing. We have an. How do you have an account with account name missing? You have an opportunity with an account missing. Maybe something has happened. How did this blank record come? No worries. We'll handle this later. Now the main issue. This is why, if you see that I mentioned that queries may we have to always have data checks to make sure query ka result is as accurate as possible. No unnecessary values should come. Right. Right. So now you will add just that condition, and always remember, last should be group by and then order by. एंड सर अगर हमें हैविंग लगाना हो कहीं पे तो वो आफ्टर ग्रुप बाय लगता है ना? Sorry. आई एम सेइंग फॉर एग्जांपल अगर हमें वेयर क्लॉज यूज करना है एग्रीगेट क्वेरी के अंदर तो वी विल हैव टू यूज हैविंग क्लॉज, सो दैट विल बी प्लेस्ड आफ्टर ग्रुप बाय ना here. Right. Yes, but you cannot use multiple group buys.
Sir, we Okay, can. ग्रुप बाय में जो तुमने मल्टीपल फील्ड्स दिया था, राइट, दैट वाज कॉजिंग द इशू. Sir, may I go on the query that I have written? No, one thing, hold on. Yes. Here, after opportunity, can you write where? It will not work here, sir. Right? What is the error? I want others to see. Others have not seen aggregate query yet. Yes. Where, what should I write? Just add any condition where opportunity है ना, और क्या है? Right, where amount is less than 1,000. कोई भी एक लिख दो. Is it visible, Right. sir? Now, yes. Now, this is for everyone else. Okay. For normal SQL queries and for aggregate queries. Right. Where जब आप लिख रहे हो, that is when you are specific record पे आप condition डाल रहे हो कि जो जो condition इस record को satisfy करता है. So, in that scenario, we use where. Right. However, for aggregate results, we cannot use where. Because aggregate is the combination. आप बता रहे हो कि एक रिकॉर्ड नहीं, आपको सारे रिकॉर्ड लेने हैं जो ये यूज करें. Right? For that we have the having clause. Now for having, go back to the query. Shall I change it? Having. Yes. Shall I run? Right. तो हमारा कोई रिकॉर्ड ने ये कंडीशन सेटिस्फाई ही नहीं किया. नहीं सर, Right. होगा, but we have to write this after this. नहीं, we don't have this sum less than 1,000, right? या बट हमें ये क्वेरी ग्रुप बाय के आगे लगानी होती है. ग्रुप बाय से पहले हैविंग लगाएंगे तो एरर देगा. कहाँ दिया है? सर वहां पे, यहाँ पे एरर आ रहा था ना, अननोन एरर में. आई विल शो यू कहाँ अगेन. पे आया है? हैविंग तो बाद में ही लगा है. नहीं, अभी तो पहले लगा दिया. हाँ, यही तो मैं बता रहा था सर. अच्छा, मेरा कुछ नेट स्लो चल रहा है. आई कुडंट सी. Put it back where it was. यस Right. सर, here. Run it. Run this query. No records. Now it has run. Right. Now, in this case, if you see, मैंने आपको क्या बोला था? Logically, you have to create a query. जब भी आप query build कर रहे हैं, you have to break it down into parts and check those logically. So the order is still the same here. क्या query करना है? कहाँ से query करना है? Right. Based on what query करना है. For aggregate, it has changed, but the logic is same. And then at the end, in what format we want. Now this one, having some amount less than null is condition को हटा दो and write account dot name not equals to null. Right. Now हमारे कंडीशन लगाने से पहले हमारे पास डेटा क्या आ रहा था? We were getting some data which was not applicable in our scenario. Right. What was the scenario not applicable for us? कि हमारे पास कुछ अकाउंट आ रहे थे जिनमें नाम ही नहीं था. So we won't know which account the data that is. Now once we have added a condition, again we can see still there is some data to be fixed. What is the data still to be fixed?
यहाँ पे कौन सा डेटा भी गलत है जिसको हमको एक्सक्लूड करने की जरूरत है? So some amount null नहीं होना चाहिए. Exactly. Then add that condition also. Query चला? Yes sir. Right. Do not add any clause which is not needed. Always keep adding clauses to improve the quality of the data that the query is returning. Okay, and start with the most basic. हमारा ask खाली है, account दिखाने हैं, so you need account name. Based on sum of amount, so you need amount. Then an order, which is descending order. आपका query वहीं पे बन चुका है. Query आप run करोगे, query चल जाएगा. Then you will see, okay, there is some incorrect data. तब जाके आप additionally सब null full सब classes डालेंगे. In your case, what you were doing is you had group by account name. You also had an added another field there, which was first I think stage add कर दिया था, right? You can't have both. Sir वो उसमें requirement में है sir. कौन सी requirement में है? Sir it was in the requirement that it has to be stage name जो होना चाहिए वो कुछ होना चाहिए VP और ऐसे करके कुछ. I'll tell you. Where Right. contact with a title VP or C level. Contact name, opportunity पे. Hold on. Yeah. Hold on. This was get the account signal recent cases. Where stage name equals to closed one, right? This is the one we are talking about, right? Yes. Right. Sir we are So doing then fourth number 4. get opportunity. No, we are doing this is third. Okay, sorry. We are This is doing third. Yes, Yeah. in this you don't need stage name for this group by. You need stage name in having. वो एक condition है कि stage name should be equals to closed one. So it is a condition. That is what I'm telling you. You break it down into smaller parts. कंडीशन को आप ग्रुपिंग ऑर्डर में नहीं डाल सकते. ग्रुप में बाय में वो जाएगा जिसके बेसिस पे आप समेशन कर रहे हो. आपका समेशन ऑलरेडी आपको पता है रेवेन्यू अगेंस्ट अकाउंट देना है, राइट? एंड Right. क्लोज्ड वन इज व्हाट? इज इट रिलेटेड टू अकाउंट? इट इज जस्ट अ फील्ड ऑन opportunity, so that will be used for filtering, which means it will get added as a condition, not as a group by. So shall I Okay, open one more time? I'll look at it and I'll be better. I'll be able to correlate it. yes, open the assignment. Right. See, you are grouping based on stage name, right? This stage name should not be here. This stage name should be afterwards, where sum of amount not equals to null. And okay, you've added stage name here also. Then why you Yes. added it in the group by? Sir, because मुझे वो वाले records चाहिए था जिनका stage name would be closed one. तो मैंने उसको group by में लगाया. नहीं, but are you showing the data? आप क्या दिखा रहे हो? If you go to the left, think of it this way: go to the left, completely left, right? Left, sorry. Sorry. Right. What you are supposed to show is one row is account, and then sum of all its opportunities, right? Yes. However, if we अगर आप group by में डाल देते हो stage name, how it becomes? It becomes account,
Then against account suppose 3 सब type होगा, open, in progress, closed. Then open का sum of opportunities, in progress का sum of opportunity, closed one का sum of opportunity. Okay, so it is like 2 level of grouping you are doing, but you won't be doing 2 level of grouping. यह रिक्वायरमेंट है कि आपको लाने ही खाली क्लोज्ड वन है, आपसे पूछा नहीं गया है कि ओपन का सम कितना है. Right, so that's why this will just be added in the condition at the end, not in the group by. राइट सर. एंड आई फिगर्ड आउट कि मैंने क्या गलती करी थी सर यहाँ पे. अभी Most of the queries correct. Just remove that stage name and the group by. it will give the same result. Exactly. सर यहाँ से भी हटा दूं? ग्रुप बाय से हटा दो, वहां कंडीशन में रहने दो. कंडीशन से हटाओगे तो ओपन अपॉर्चुनिटीज भी आ जाएंगी. तो वो दोनों जगह लिखना पड़ेगा. अगर मैंने यहाँ पे आउटपुट कराया तो वो ग्रुप बाय भी करना पड़ेगा. नहीं, अरे सिलेक्ट आईडी में मैंने नहीं बोला है, यहाँ पे रखो, यहाँ से भी हटा दो. यहाँ से भी हटा दूं? Yes, you don't need to show the stage. ओके. Must be group. Where did group by go? अरे वो ग्रुप बाय ही हट गया क्या? दिस इज ग्रुप बाय सर. बाय अकाउंट आईडी ओनली. Hold on, what you removed? Remove this from stage name completely from here. First remove stage name from here. हियर. Yes, remove this and clause. उससे पहले वाला and भी आप हटाओ. Right, now just run it once. Right, this is just account versus their sum. राइट. Okay, this is account versus sum. Now, if you want to add another field into this, which is your opportunity field, right? जो आपका opportunity object पे है. So then what are the things you have to take into consideration? If you want to use it as a condition, so then that also has to be included in the query. Okay, राइट. right? But in this case, the purpose of the aggregate query is कि हमारे पास account है, उसके against हम sum दिखा रहे हैं, तो हमने यहाँ पे दिखा दिया. Now, if you want to add it based on a stage, then only you also add it in the query. If you don't add a field into the query, then you can also not use it in a condition. तो सर इफ आई एम नॉट मिस्टेकन देन जो हमारा रिक्वायरमेंट है कि हमें उन्हीं अकाउंट्स का चाहिए जिनका क्लोज्ड वन हो अपॉर्चुनिटी में. राइट. Right. तो इज देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इनमें से इन ये जो कॉन्टेक्ट आईडी आ रही है विच इज रिफ्लेक्टिंग टू सम कॉन्टेक्ट रिकॉर्ड Account. Right. अकाउंट सॉरी अकाउंट रिकॉर्ड वो उसमें जो लिंक्ड अपॉर्चुनिटी का स्टेज हो वो क्लोज्ड वन ना हो. Yes. सो हमें यहाँ पे अभी वो कंडीशन लगानी चाहिए. Right. But then you also have to add it in the query. आप खाली एक जगह पे नहीं रख सकते. You have to keep it in all the places. Didn't I kept sir in all the No, places? like do one thing. After account ID, write the stage name. Yeah. In the starting, after account ID, write the stage name. Now run the query. It will not run. We have to group by it. Run it once, na? Let the error come. What is the error? Right. Now, if you see here, because you have why this error has come.
right? Click on OK. So the thing is, you are aggregating something, right? So within an aggregate query, you cannot have direct fields being displayed. This is for everyone else. Okay, कि अगर आप कोई सपोज थिंक ऑफ इट दिस वे कि एक कस्टमर है और एक बिजनेस है और उसके सारे कस्टमर्स का डेटा है. नाउ जब आप सम करके टेबल बनाते हो, एनीवन हु हैज वर्कड विद एक्सेल प्रीवियसली यू विल नो दैट इन अ पिवट टेबल इट इज ऑलवेज द समराइजेशन ऑफ डेटा. सम, काउंट, मिन, मैक्स, ये सब ऑपरेशन होते हैं ना पिवट टेबल में. सो इट इज ऑलवेज द समेशन, विच इज वाई यहाँ पे हम डायरेक्टली स्टेज नेम नहीं दे सकते, because this row is why we can't give a stage name directly. That is what I'm trying to explain. Currently a table is just account और उसका revenue. तो account का क्या stage name हो सकता है? No. Right? So that is the reason this cannot be added as a direct field. इसीलिए हमको कोई भी field जो account पे नहीं है that has to be added into the group by also. आप जाके अब group by में add कीजिए. Just group by में add करना. Okay, sir. Right, now run the query. One second. Right, sorry. Now, up this case is what I was mentioning, right? So if you see here, in this case हमने even तो aggregate किया है, हमारा अलग अलग आया कि नहीं, without closed one आया कि नहीं, आया. right? So 3 steps you have to follow. If you add a field, why you cannot add an opportunity field in this query? क्योंकि आप already account के basis पे group कर सके. So unless it is a field on the account, आप उसके यहाँ पे directly add नहीं कर सकते. Then if you have added it here, then you have also have to group based on that. तो वो हमारे पास यहाँ पे आ गया, right? So based on that we can see, okay, it is not satisfy our requirement yet. So now again, what is the next step we have to do? You have to filter out the stage name. Yes, because our ask is, see, we know aggregate will return based on stage name. So what is it showing? Closed one इसका, right? उसके बाद आपका if you see here, the second line, the account ID in the second line, if you see here, right, is the same as the account ID in the fourth line, and it is the same as the account ID in the second last line. Right. Right. So that is why when you are grouping with it, so it is like complete group. उस account का खाली वही नहीं आ रहा, उसके जितने applicable, it becomes like a 2 level of group. पहले account, उसके बाद उस account के अंदर से 3 status, right? फिर उस 3 status का individual sum अभी आपको दिख रहा है. You are not seeing the account level sum, right? So Right. then we don't want to see all statuses. हमको चाहिए क्या? Closed one specifically. So now we will go to our condition ka block. For aggregate query, what is the condition ka block? Having. So add it after that, and stage name is not equal, is equals to closed one.
now all IDs and stage names are उनका जो group है that is unique. Yes, because now it is grouped together as specific accounts only for those closed ones. So all those duplicate values जो पहले आ रहा था वो अब हट गए. Okay, so anything we add, we also have to filter by it. Okay. Okay. So with aggregate queries, sometimes the result do end up being unpredictable, which is why it is always better to break it down and start from the simplest and slowly add components. Okay. Right. Shall I stop this sharing, sir? Yeah. And did you understand why, what is needed, why it is needed? Why do we have to add it as the group? Also, why do we have to add it as a condition? ये वाला सिनेरियो पूरा क्लियर हुआ? क्यों Right, हमने sir. ऐड किया? राइट, ऐड करने का तो हमको सैंपल क्वेरी तो नेट पे सर्च करने पे मिल जाएगा, बट देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड व्हाई वी हैव एडेड इट. दैट इज व्हाट यू नीड टू क्लैरिफाई ताकि खुद से आप लिख सको. ओके, Yes. फाइन. लेट मी. Okay, before I start sharing, anyone else has any doubts, any queries, any questions? No? Okay, fine. Right. So then today, what we'll begin is, in Apex, right, what we have is a class structure, a method structure, and उसमें हम अपना कोड लिखते हैं. हमको जब मेथड कॉल करना है, मेथड कॉल कर सकते हैं, right? But the core principle of Apex is still we have to build some kind of automation. कोड से आप ऐसी चीज बनाने की कोशिश कर रहे हो जो आप मैनुअली अभी नहीं कर पाते हैं. कुछ कंडीशन के satisfaction पे some logic you have to execute. That is the base requirement of any code, that you have to do some process. Now in Salesforce का primary requirement है data, that it is to store data. So then any and all automations will in some way be linked to how the data is modified, whether new data is created, updated, and deleted, and the other operations that are happening. So in that case, Salesforce has provided us something called a trigger. Now, what is a trigger? A trigger is in Salesforce, like core Salesforce ka jo implementation hai, trigger is basically, you can think of it like an event which gets fired whenever records are modified. That is called a trigger. Based on that trigger getting fired, multiple things can be done. हमने वर्कफ्लो रूल्स बनाए थे, हमने record triggered flows. वो record triggered flow was what? That on record modification there is a trigger that gets fired that will now run the flow. Similarly, there is also Apex trigger, which is what? Apex code that will run whenever that specific trigger is fired. How to create this? Apex class, Apex trigger. Just यहाँ से हम create करेंगे. Now the first thing to remember is, अब ट्रिगर फायर तो किसी का भी हो सकता है. कॉन्टैक्ट का हो गया, अकाउंट का हो गया, अपॉर्चुनिटी का हो गया. हाउ डू यू नो कि ये वाला कोड किस पे चलना चाहिए? यू हैव अ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट कि दिस कोड शुड ओनली रन व्हेन अ कॉन्टैक्ट इज अपडेटेड, राइट? तो हमारे फ्लो में भी वैसे भी था. इवन दो इट वाज अ रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो, वी हैव टू टेल देम कि कौन से डेटा का रिकॉर्ड. सिमिलरली फॉर Apex trigger also, you have to tell them that okay, contact का चाहिए मुझे, right? So you have to select the specific object.
that अभी मैं जो कोड लिख रहा हूं, this class should run on modification of contact. And what should be the name? In most cases, this should be the name. Object name and then trigger. यही अगर मेरा employee trigger. Okay. In most conventions, this is the one to follow. Most projects, organization also follow this. Unless sometimes one of cases they have their own template and naming convention, but mostly it is this. Contact trigger. Now, what is a trigger by itself? It is nothing but a class. Okay, trigger by itself is nothing but an apex class with just few parameter difference. Very simply, you can see this is public class capital. Here we don't need that क्योंकि ये चलेगा रिकॉर्ड पे. इसका ना पब्लिक एक्सेस चाहिए ना प्राइवेट एक्सेस चाहिए. रिकॉर्ड अपडेट होगा ये चलेगा. दैट इज सो इट इज आइडेंटिफाइड एज अ ट्रिगर. नेम हमने दिया था. ऑन विच ऑब्जेक्ट हमने कॉन्फ़िगर किया. नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ बिफोर एंड आफ्टर. What is this thing? Right, before and after, what happens? So think of it this way. Let's say I was creating an employee record, right? हम जब टेस्ट कर रहे थे हमने employee record create किया था. Then first it used to check the validation rule, right? Yes or no? पहले validation rule चेक करता था. Yes or no guys? कब चेक होता था validation rule? सेव होने से पहले. Right. Once the validation rule has passed, only then the record is saved into database, right? अब record जब database में save होता है तब जाके मेरा condition hit होता है कि चलो ठीक है इस record पे name is equals to ABCD. It is satisfied. So then what I was doing, I was sending out an email to ABCD, right? So in this case, there are two different logic spaces. One is before the record is saved into database, right? उससे पहले भी हम कुछ चेक कर सकते हैं, कुछ अपडेट कर सकते हैं, कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं. And after the record is saved into the database, right? So that is what this before and after means. Before insert and after insert. मतलब record insert हो रहा है, उसके अंदर भी we have two different instances. ये trigger का कोड दो बार चलेगा. एक बार डेटाबेस में सेव होने से पहले, एक बार डेटाबेस में सेव होने के बाद. Now you guys will ask, why run it two times? डेटाबेस में सेव होने के बाद चलाओ. What is the issue with that? या फिर पहले ही चला लो. What is the issue with that? So let me give you a scenario. मेरे पास UI में मैं email ID डालता हूँ for a contact. Okay, email ID is say UCT @ testcompany.com. What I want, जब डेटाबेस में सेव हो तो मेरे कॉन्टैक्ट पे एक फील्ड है
company email domain, right? This should get set as just testcompany.com. मैं चाहता हूं ये मेरा सेव हो, ये मेरा सेट हो. Now, if my trigger was only running once after the record is saved into the database, तो क्या होता? मेरा डेटाबेस में सेव हो गया, फिर वो देखेगा अच्छा ये फील्ड अपडेट करनी है, चलो ये फील्ड अपडेट करते हैं, एंड देन फिर से सेव करना पड़ेगा मुझे डेटाबेस में, राइट? जस्ट एक फील्ड के लिए मुझे फिर से सेव करना पड़ेगा डेटाबेस में. What if this logic could happen before I save it into the database? That is when we have this before logic. तो sometimes जब आपका कोई रिकॉर्ड मॉडिफाई हो रहा है, कुछ अपडेट हो रहा है, and then parallelly you may want to also set some other values in that record. So is it better कि एक बार डेटाबेस में सेव हो, फिर हम मॉडिफाई करें, फिर सेव हो, या फिर सेव होने से पहले सारे मॉडिफिकेशन हो जाए, फिर एक ही बार सेव हो? Which one is better? पहले ही चेक हो जाए. पहले सेट हो जाए, क्योंकि वो रिकॉर्ड तो हम सेव करने ही वाले हैं, राइट? तो सेव करने से पहले ही सारा वैल्यू सेट कर देते हैं. तो फॉर दैट स्पेसिफिक इंस्टेंस वी हैव द बिफोर इंसर्ट, कि हमको उसी रिकॉर्ड को कुछ मॉडिफाई करना है, तो क्या बाद में फिर से दूसरी बार करना. सो एक ही बार में अगर हो जाए, इट इज मोर एफिशिएंट. नाउ थिंक ऑफ द अदर केस. मेरा कॉन्टैक्ट जब इंसर्ट हो जाएगा, इंसर्ट होता है, एंड देन आई हैव टू सेंड अ मेल टू दैट कॉन्टैक्ट कि देखो आपका रिकॉर्ड इज क्रिएटेड सक्सेसफुली. मैंने डेटाबेस में सेव होने से पहले मेल भेज दिया, कुछ वैलिडेशन रूल का एरर हो गया, कुछ इशू हो गया, कुछ इशू हो गया, रिकॉर्ड सेव नहीं हुआ, मेल चला गया लेकिन. इज दैट करेक्ट? No. नो, राइट? सो दैट मीन्स अगर मेरे को कोई भी रिलेटेड काम करना है डिपेंडेंट ऑन दिस रिकॉर्ड, कि देखो ये रिकॉर्ड क्रिएट हुआ है, इसलिए हमको एक ये बनाना है, या ये सेंड करना है, या ईमेल भेजना है, ये करना है, देन इट इज बेटर इफ आई डू इट आफ्टर आई नो फॉर श्योर कि हाँ रिकॉर्ड क्रिएट हो चुका है, राइट? अगर मेरे को किसी को फॉर्म भेजना है, मेल भेजना है, तो इट इज बेटर कि पहले उसका रिकॉर्ड क्रिएट हो जाए, उसके बाद मैं भेजू. ये सर नो? Yes. राइट? सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द आफ्टर लॉजिक. तो ट्रिगर चलेगा आपका दो बार, एक बार चलेगा बिफोर, एक बार चलेगा आफ्टर. नाउ सेम अप्लाइज फॉर, अब बिफोर तो मेरा हो गया, राइट? इंसर्ट भी हो गया, आफ्टर भी हो गया. सेम मेरे पास, चलो बिफोर अपडेट हो गया, आफ्टर अपडेट हो गया, बिफोर डिलीट हो गया. ना, रिकॉर्ड तो मेरा डिलीट हो गया, उसके बाद उससे रिलेटेड मैं कुछ काम कर सकता हूं? कैन आई डू समथिंग रिलेटेड टू इट? No. नो. व्हाई नो? थिंक ऑफ इट दिस वे. अकाउंट के साथ अभी अपॉर्चुनिटी मेरा लिंक था, राइट? यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मेरे पास था. अब अगर मेरा अकाउंट डिलीट हो जाता है, उसके बाद क्या मैं उस अकाउंट का आईडी लेके एक नया अपॉर्चुनिटी बना सकता हूँ? नो. डिलीट तो हो गया ना, जिस रिकॉर्ड को लेके काम करना था वही डिलीट हो गया, तो उसके साथ क्या काम करेंगे? इसीलिए आफ्टर डिलीट डज नॉट एग्जिस्ट. देयर इज नो आफ्टर डिलीट. इसी का रिवर्स भी है, विच इज व्हाट?
जब आप अनडिलीट करते हो, बिफोर अनडिलीट तो रिकॉर्ड रिसाइकल बिन में पड़ा हुआ है, आप उसको लेकर कुछ काम कर नहीं सकते। अनडिलीट एक बार होके रिकॉर्ड रिसाइकल बिन से बाहर आ गया, उसके बाद आप उसको यूज करके प्रोसेसिंग कर सकते हो। सो आफ्टर अनडिलीट इज देयर। नाउ मर्ज का क्या ऑप्शन रहता है? एनीवन? सर मर्ज का क्या? मर्ज के लिए क्या बिफोर एप्लीकेबल होगा, आफ्टर एप्लीकेबल होगा? कौन सा एप्लीकेबल होगा? आफ्टर। आफ्टर मर्ज होगा? बिफोर। बिफोर मर्ज होगा? सर दोनों वैसे नहीं तो हो होना ही सकता? नहीं चाहिए, बट still thinking if I have to give an answer, I will say before. Okay. Wasim, any logic from you regarding your answer? Why you think it should be after? No, sir, I'm not thinking of particular. Okay. No issue. So, what do we know about merge operation for sure? मर्ज में मर्ज से पहले कितने रिकॉर्ड रहेंगे? सर One. डुप्लीकेट रिकॉर्ड होता है उसमें। बट सेल्सफोर्स में रिकॉर्ड कितने हैं? डुप्लीकेट तो हमने डिटरमाइन किया है, मतलब ऑलरेडी वो बने हुए हैं। राइट? तो हाउ मेनी रिकॉर्ड्स आर देयर? 2, 2. आफ्टर मर्ज हाउ मेनी रिकॉर्ड्स आर देयर? 1. 1. The only reason delete does not have an after is because उसके बाद रिकॉर्ड ही नहीं है, राइट। राइट? अनडिलीट का बिफोर क्यों नहीं है? क्योंकि उससे पहले रिकॉर्ड नहीं है। मर्ज में दोनों केसेस में रिकॉर्ड है, तो दोनों होंगे। सर बिफोर अनडिलीट इसलिए नहीं है बिकॉज उससे पहले तो डेटा ऑलरेडी है ही है ना। बिफोर अनडिलीट में तो डेटा नहीं है, क्योंकि वो रिसाइकल बिन में पड़ा हुआ है। रिसाइकल बिन के डेटा को लेके आप काम नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट मॉडिफाई डाटा इन रिसाइकल बिन, राइट? ओके। उसको रिस्टोर करना पड़ता है, फिर आप उस पर काम करोगे। तो टेक्निकली इट इज डिलीटेड, इट इज नॉट इन द सिस्टम। अनडिलीट होने के बाद इट कम्स बैक टू द सिस्टम, तब आप उसको यूज कर सकते हो, राइट? So but for merge, both are applicable, before and after. It's just before merge will be. Before merge, how many records will be there? 2. 2. And after merge, you will just have the one which is set to prime, right? Now, till this it is fine. अब इसके अंदर का कोड हम कल करेंगे। Instead, I'll tell you some guidelines to follow. इसको कहाँ प्रॉब्लम हो गई? ज्यादा ऑपरेशन दे दी क्या मैंने? What did I do here? Let's remove. Let's come back to this. प्रॉब्लम होता है। Okay, right. Now, this is a trigger, contact trigger on contact. Okay, I'll go to apex trigger, contact trigger to on contact. दो क्लास बन गया मेरा, दोनों ट्रिगर है, दोनों बिफोर इंसर्ट पे चलेगा।
बट आई डोंट नो कौन सा पहले चलेगा. देयर इज नो वे फॉर मी टू नो कि अगर मैं कॉन्टैक्ट इंसर्ट करता हूं पहले कॉन्टैक्ट ट्रिगर 2 चलेगा या फिर कॉन्टैक्ट ट्रिगर चलेगा. एंड देयर इज नो वे यू कैन डिटरमाइन दैट इन Salesforce, which is why what Salesforce tells is do not have multiple triggers on an object. You can have, there is one to scenarios जहाँ पे इसकी जरूरत पड़ सकती है, but in most cases do not have multiple triggers for the same object because you don't know the ordering. Now, if you don't have to, then what is the approach to go with? Always have one trigger जिसके बीच में you write very optimized code at least in trigger. Normal Apex class में कुछ थोड़ा इधर उधर कोड होता भी है, कभी कभार मेथड चलता है, that is fine. ट्रिगर का कोड should always be optimized, it should always be bulkified, always lists को लेके काम करना है आपको, सिंगल वेरिएबल लेके कुछ नहीं करना. Okay. Due to this situation, what has come up with is something जो term आप लोग hopefully interview में all of you will get asked is trigger framework. Have you worked with a trigger framework? Do you know what a trigger framework is? Can you give an example what change here made? So what is the trigger framework? Because as I told you, एक ही क्लास में पूरा कोड आपको डालना है, मतलब एक ही जगह पे, right? Normally you won't even write too much code in the trigger. So what we have come up with is something called trigger frameworks, and there are multiple trigger frameworks. It's not like one is definitely better than other. Every model has its own pros and cons. किसी सिनेरियो में this model works better, किसी सिनेरियो में this model works better, right? There are multiple trigger frameworks, and based on requirement, you can choose which one is more aligned with your ask. Why the trigger framework is there? Firstly, to make sure खराब कोड ट्रिगर में ना आ जाए. That is the first. Second thing is ज्यादा कोड ही ट्रिगर में ना जाए. You should always try to write as little direct code in trigger as possible. So how we'll do that? You should have a handler class, helper class, or there is other infrastructure. अलग अलग वर्जन में अलग, कुछ में ट्रिगर डेटा फैक्ट्री होता है, वहां से अलग अलग क्लास बदल हो जाती है. तो basically you will have less code in trigger, but maybe more method calls in trigger. दूसरी classes में आप method बनाएंगे, वो यहाँ से call out trigger से, right? So there are some guidelines related to Apex triggers, but nothing too complex. It's just something जो out of habit आप वैसे भी सीख जाओगे जल्दी, so should not be an issue, right? So this is one mistake you should always avoid. However, एक ऑब्जेक्ट पे दो ट्रिगर मत बनाओ, कभी जो है उसी के अंदर कोड लिखो, राइट? और डायरेक्ट कोड मत लिखो, रादर वहां से फिर हेल्पर कॉल करो, फिर हेल्पर में जाके, हैंडलर में जाके, ऑब्जेक्ट हैंडलर में जाके वहां पे कोड लिखो. देयर आर वेज. आई विल क्रिएट कोड्स फॉर द सेम, but those are the kind of approaches you guys should be following. Now till now, basic of what is a trigger, how do I link a trigger to an object, what are the kind of operations, is this clear? Yes, sir. Great. Tomorrow we will have class. Okay, maybe a bit late, but we will have a class because we will be studying one of the most, I would say, most frequently used things within trigger, जिसका यूज अलग अलग फ्रेमवर्क में होता ही है, somewhere or other it is used to identify कि अभी जैसे I'll give you brief. जैसे सपोज अभी ट्रिगर 2 बार चलेगा, राइट? आई हैव टोल्ड यू ट्रिगर 2 बार चलेगा. नाउ अभी जो चल रहा है ये बिफोर इंसर्ट वाला चल रहा है या आफ्टर इंसर्ट वाला चल रहा है, राइट? अभी अपडेट वाला चल रहा है या इंसर्ट वाला चल रहा है, right? So you need some ways to define out these things. So for this, before we write code in the trigger, we should know what are trigger. There is something called trigger context variables, which is variables within the trigger जो आपको उसका status बताते हैं कि किसने ट्रिगर किया, कब ट्रिगर हुआ, कौन सा ऑपरेशन चल रहा है, कौन सा DML हुआ जिसकी वजह से ये हिट हुआ है, right? So all those things. So we'll probably cover those tomorrow. The class may be a bit late, but we'll surely have class tomorrow, right? And we'll go through this thing in more detail. Am I clear? So
Yes. Great. Great, everyone. Thank you for your time. Have a good night.